Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good morning. You are watching my YouTube channel English with Mavishra, and Mavishra is here. Students, in the previous class we have learned what is narration, what is the meaning of narration, how can we report the word of speaker, and we have learned there are two ways of reporting the words of a speaker, direct and indirect. We have also learned what is the difference between direct and indirect speech, and how can we convert the direct statement into indirect. In the previous video, we have learned a few rules of changing the direct speech into indirect, and in this video we will learn a few more rules about that conversion. So let we move towards our topic. Rules of changing direct speech into indirect. In the previous video, we have learned that if our reporting verb is in past tense, so how can we convert the reported speech into indirect speech? पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अगर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है यानी इन्वर्टेड कॉमास से बाहर जो पार्ट है वो अगर पास्ट टेंस में होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी चेंज होता जाएगा कॉरिस्पॉन्डिंगली। यानी अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है तो अंदर पास्ट में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो ये वाला थोड़ा चलेगा रूटीन उसको चेंज करने का। In this video, we will learn a few more rules. The tenses may not change if the statement is still relevant, or it is a universal truth, or it is a general statement. आज हमने सीखना है कि अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में होगा लेकिन अंदर जो टेंस चेंज नहीं होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वो कौन सी कंडीशंस हैं। इफ़ देयर इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? आलमी सच्चाई होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, या कोई प्रोवर्ब्स होते हैं कहावत, उसे हम चेंज नहीं कर सकते तो उसे हम एज इट इज़ लिख देते हैं, टेंस चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टीचर सैड द अर्थ गोज़ राउंड द सन। In this statement, the reporting verb or main verb, the teacher said, is in past tense while the reported speech is in present. The earth goes round the sun. So how can we convert this statement into indirect statement? The teacher said, or we can say told, the earth goes round the sun, because this is a universal truth, so we can't change here the tense of the reported speech. So हम उसे प्रेजेंट में ही लिख रहे हैं। द टीचर सैड, द टीचर टोल्ड, द अर्थ गोज राउंड द सन। लेट वी अंडरस्टैंड इट विद एन अदर एग्जाम्पल। द टीचर सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। In this statement, the teacher said is in the past tense while the reported speech is in the present. Honesty is the best policy. So according to the rule, we will not change the tense of the reported speech. The teacher said that honesty is the best policy. In this statement, the reporting verb is in the past while द रिपोर्टेड स्पीच इज़ इन द प्रेजेंट। सो जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज हम नहीं करेंगे। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ लिखेंगे, वॉज हम नहीं लिखेंगे। सो नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स एन अदर पॉइंट ऑफ दिस कन्वर्जन। If the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the direct speech do not change. Students,
पिछले पॉइंट्स में हमने बात की कि अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में होगा तो अंदर टेंस चेंज नहीं होगा, अगर अंदर टेंस चेंज होगा, और अगर टेंस अंदर नहीं चेंज होगा तो उसकी कौन सी कंडीशंस होंगी? दैट माइट बी अ प्रोवर्ब, अ जनरल स्टेटमेंट और अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हम बात करेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में होगा तो जो रिपोर्टेड वर्ब है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई एम अनवेल। In this part of statement, he says reporting verb is in the present tense, while reported verb is also in the present. So how can we convert this statement into indirect? He says that he is unwell. According to role, we are not changing here the tense of the reported speech. We are writing here he is unwell, not he was unwell. He says that he is unwell. Okay. He says he has passed the examination. In this statement, the reporting verb is in present, while the reported speech is in present perfect. So according to the rule, we will not change here the tense of the reported speech. So we will convert the statement into indirect as he says that he has passed the examination. He has passed the examination. Okay. If our tense is future of the reporting verb, she will say, I am not a thief. In this statement, the reporting verb is in future. So how can we convert this statement? She will say that she is not a thief. So according to the rule, if our reporting verb is in present or future, the tense of the reported verb will not change here. So student, let we revise the points. If our reporting verb is in past, the tense will change of reported speech. Or if in present or future of the reporting speech, the tense of the reported speech will not change. So next we will learn about the rules of changing of pronouns. जो pronouns change होते हैं उसके क्या rules हैं और उसको हम कैसे change करेंगे. The pronouns of the direct speech are changed where necessary so that their relations with the reporter and his hearer rather than the original speaker are indicated. Let me understand this statement. Observe the following examples. He said to me, I don't believe you. Here student, we are learning here how can we change the pronoun of the indirect of the statement while the conversion of the indirect statement. He said to me, I don't believe you. यहाँ स्टूडेंट्स एक हिंट है वो विच इज़ वेरी इसेंशियल टू कीप इन माइंड, और मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोनाउंस को चेंज करते हुए, तो इस पॉइंट को आपने ज़रूर माइंड में रखना है. ही सेड टू मी, दिस पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, while the part of the statement which is in inverted commas is called reported speech. आपने रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सब्जेक्ट को देखना है. इफ़ वी स्कैन दिस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ही सेड टू मी, हियर ही इज सब्जेक्ट एंड मी इज एन ऑब्जेक्ट. एंड इफ वी सी इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई इज अ सब्जेक्ट हियर. अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन होंगे तो हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच.
अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी होगा तो हम उसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी अगर हम इस स्टेटमेंट को चेंज करेंगे तो हमने जो आई है इसको अकॉर्डिंगली चेंज करना है बाहर वाली जो स्टेटमेंट है उसके सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग। ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, ही सेड दैट ही डिडंट बिलीव मी। Let me understand it with another example. She says to him, I don't believe you. Here, if we see inside the inverted commas, here subject is I, यानी फर्स्ट पर्सन है, तो हम इसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। She says that she don't believe him. Okay, let me move towards third example so that we can understand it more clearly. She said to me, you are a lazy boy. Here, if we see inside the inverted commas, in the reported speech, the subject is you, यानी सेकंड पर्सन है, तो हम इसको चेंज करते हुए रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के यानी शी सेड टू मी इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हियर शी इज सब्जेक्ट एंड मी इज ऑब्जेक्ट, सो वी विल कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। शी सेड टू मी यू आर अ लेजी बॉय, शी सेड will change into told. She told me that me here is the objective form of I. So we are using here as a subject. So we will convert this pronoun into the subjective form. She said to me, you are a lazy boy. She said to me that I was a lazy boy. Here keep in mind that the reporting speech is in past, so we will change the tense of the reported speech. Reporting speech is in past, so we will convert the statement into the past tense according to the rule. She told me that I was a lazy boy. एक हमने इसमें टेंस चेंज किया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा हमने अंदर सेकंड पर्सन है तो हमने प्रोनाउन जो चेंज किया वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज किया। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो हम उसका प्रोनाउन चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेकंड पर्सन है तो हम उसका ऑब्जेक्ट उसका जो प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। और अगर अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर थर्ड पर्सन होगा तो प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। Let me move towards the fourth example. She said, I am glad today. Here, first of all, टेंस भी चेंज होगा और प्रोनाउन हम कैसे चेंज करते हैं, लेट वी सी। शी सेड दैट शी वॉज ग्लैड दैट डे। हियर in inverted commas there is a first person, so we will change it according to the subject. She said that she was glad that day. Today will be changed into that day. Keep in mind, एक तो हमने टेंस चेंज किया, एक हमने प्रोनाउन चेंज किया। चूँकि वो पास्ट में हो गया तो टुडे को हमने दैट डे में चेंज किया। कुछ और एक्सप्रेशंस भी होते हैं जो चेंज होते हैं। लेट वी अंडरस्टैंड दोज एक्सप्रेशंस एंड वर्ड्स। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस आर जनरली चेंज इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। दिस now becomes then,
ये हम जो चेंज करेंगे, अगर आपके इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वर्ड नाउ यूज़ हुआ है तो उसको चेंज करते हुए हम देन में चेंज कर देंगे। टुडे है तो टुडे विल बिकम दैट डे, हियर बिकम देयर, tomorrow becomes the next day, yesterday will change into the day before, ago will change into before. Thus, so if there is a last night, we will write during the conversion the night before. Let me understand it with the example. He said, I am glad to be here this evening. इसका कन्वर्जन करते हुए एक तो हमने बात माइंड में रखनी है कि हमने टेंस का चेंज करना है, रूल का कैसे ख्याल रखना है, और जो सर्टेन वर्ड्स जिसको अभी हमने डिस्कस किया है वो कैसे चेंज होंगे। ही सैड, आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेंज करते हुए टेंस का ख्याल रखेंगे। रिपोर्टिंग जो स्पीच है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास में है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी हम पास में करेंगे। He said that he was glad. I am glad की जगह पे हो जाएगा he was glad। उसके बाद हमने प्रोनाउन कैसे चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर फर्स्ट पर्सन है I, तो हमने इसे, हमें पता है कि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो हमने उसके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर अंदर सेकंड पर्सन होगा तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। और इफ़ देयर इज़ अ थर्ड पर्सन, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, तो कोई चेंज हम उन प्रोनाउंस में नहीं करेंगे। He said that he was glad to be there that evening. Here, in the above mentioned statement, which is in inverted commas here will be changed into there. This will become that evening. He said, I am glad to be here this evening. He said that he was glad to be there that evening. So students, today we have learned a few more rules about the conversion of the direct statement into indirect. We have learned what would happen if there is a past tense in the reporting speech, and how can we convert in the indirect speech, or what will happen if there is a present tense or future tense in our reporting speech, how can we change that statement, or we have learned a few rules about the changing of pronouns. In the next session we will learn how can we change the direct statement of a question into indirect commands or request. So students, our today's session end here, and you are always welcome to contact me regarding these videos. Take care and Allah Hafiz.